Okay, moving on to today's lecture. This was a problem which we discussed yesterday as well. Although we didn't completed the solution of this problem, rather we only discussed the brief outline of what type of motions various links shown in this rigid body mechanism are undergoing. So a quick review कि हमने कल क्या किया था. ये आपके पास एक rigid body mechanism show किया गया है, and the link AB is rotating in a counterclockwise direction with a speed of 4 radians per second. You need to identify which type of motion each of these links is undergoing, and then you need to find out the velocity of this piston E or slider E or collar E, whatever you want to call it, at the instant shown. So जो motion हमने identify किए थे, इसमें अगर हम इस overall mechanism की बात करें, तो since link AB is being grounded from point A, so it would be undergoing pure rotational motion about point A. Similarly, if we talk about link CD, it is again being grounded from point C, so it would have pure rotational motion about point C. So these two links are in pure rotational motion. The other two links, which are links BD and DE, they are undergoing जनरल प्लेन मोशन एट द इंस्टेंट शोन. और वो किस तरह जनरल प्लेन मोशन है वो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हम नेक्स्ट इंस्टेंट कंसीडर करें तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे लिंक BD कहाँ लोकेटेड होगा, इसी तरह लिंक DE कहाँ लोकेटेड होगा. और चूंकि उनमें साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन हो रही थी, तो दैट्स व्हाई लिंक BD एंड DE आर इन जनरल प्लेन मोशन. इसके मुकाबले में अगर हम स्लाइडर E की बात करें तो एट द इंस्टेंट शोन, और सिंस स्लाइडर E इज बीइंग कंस्ट्रेंड टू मूव विद इन द हॉरिजॉन्टल स्लॉट, सो इसका जो मोशन है दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसलेटरी मोशन. सो ओवरऑल आपके पास 5 लिंक्स हैं. 2 of them are in rotational motion, 2 of them are in general plane motion, and 1 of them is in translation. So जो links rotational motion कर रहे हैं, you are going to apply V equal to omega cross R on those links. Those links which are undergoing general plane motion, you are going to apply the relative velocity equation on those links in order to solve it. Okay, so we need to find out at the instant shown what is the velocity of this slider block E. Okay, in order to start the solution, हम हमेशा solution उस लिंक से स्टार्ट करते हैं जिसके हवाले से हमें डेटा गिवन हो. Since the data regarding link AB is known to us that it is rotating in a counterclockwise direction with a speed of 4 radians per second, so we are going to start our analysis from link AB. So starting our analysis from link AB, since link AB is in rotational motion, so what should be the velocity of point B? VB क्या होगी वेक्टर फॉर्म में? omega AB. So omega cross R, it is going to be the velocity of point B. Omega is going to be the angular velocity of this link AB, and R is basically the absolute position vector, which is being named here as RB. So this is going to be the velocity of B. Omega is already given to you that this link AB is undergoing a rotational motion with a speed of 4 radians per second in a counterclockwise direction. So you can write omega to be equal to 4K cross RB. What is this vector RB? The absolute position of B with respect to A. So this is going to be the vector which is being shown to you with a blue arrow. What should be this vector? Can you identify it? Yes, sir. -2 into cos 30 -2 into sin 30. So it is going to be -2 cos 30I plus 2 sin 30J, because this vector lies in the second coordinate, therefore it should have a negative X component and a positive Y component. So once you take this cross product, the velocity VB would comes out to be VB equal to -6.928 I, sorry, -6.928 J. So -6.928 J minus 4I. ये आपके पास velocity of point B आ जाएगी, and the units here are feet per second. So VB comes out to be -6.928 J minus 4I. Okay, now moving on to the next link, which is link BD. Since we have already discussed that this link is undergoing general plane motion, link BD is undergoing general plane motion. So we need to write the relative velocity equation for this link BD. What should be our base point? B. D or B? B, sir. Since the motion of point B is known to us,
in step number 1. So we are going to make B as our base point, and we are going to write the relative velocity equation by making B as the base point. So the equation would become velocity of D should be equal to velocity of B plus omega cross R, where omega is going to be the omega of this length BD. So we can write it as omega BD, and R is going to be the relative position of D with respect to V. So VD would become VB, which is already found in the first step, which is minus 4I minus 6.928 J. ये आपके पास VB आ गया था. Can you judge the direction of omega? कल जो हमने draw किया था, this length BD is rotating in a clockwise or a counterclockwise direction. Can you judge it? Counterclockwise direction. हमने कल discuss किया था, it's going to rotate in a counterclockwise direction. So we can write it as plus omega BD K cross, what is RDB? 1I. So it is going to be, it would have a magnitude of 1 foot, and its direction is towards the positive x-axis. So we can write it as 1I. So this is going to be omega cross R. Once you simplify it, it would become minus 4I minus 6.928 J. As far as omega cross R is concerned, if we consider this smaller triangle, then this would become omega BD. K cross I is J. So this would be J, and this would represent the velocity of point D on the left hand side of this equation. ठीक है? Clear है यहाँ तक? Let me call it as my equation number 1. Is it clear to all of you? Okay. Yes, now, if we consider this length CD, what type of motion this length CD is undergoing? pure rotation. Rotational motion. So if I ask you to determine any point, to determine the velocity of any point on this length CD, what should be the direction of velocity? VD. Towards the left. Towards the left. How you have judged it? Since link AB is rotating in a counterclockwise direction, so accordingly link CD would also rotate in a counterclockwise direction in order to be consistent with the motion of AB. ऐसे ही है, ये तो नहीं हो सकता AB counterclockwise कर रहा है और CD जो है वो clockwise move करना शुरू हो जाए. Yes, sir. So it means that this length CD is basically rotating in a counterclockwise direction about point C. So what should be the direction of velocity of DVD? Sir, velocity of? D, point D. So towards left होगी. Towards left hogi. So we don't know its magnitude, but its direction is known to us. So we can write VD vector to be equal to minus VD I. Ye point clear hai Rekhe? Yes, sir. Yes. Okay, so now you compare the I and J coefficients on both sides of this equation. Once you are comparing the I coefficient, on the left hand side it is minus VD, on the right hand side it is minus 4. It means that VD is basically equal to 4 feet per second. Now, what does this 4 represents? Positive आ गया ये तो. इसका क्या मतलब है? क्या ये right की तरफ जा रही है velocity? Left. पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जो आपने assumption ली थी कि VD is moving towards the left, it is correct. पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि the velocity of D has a direction towards the right. Rather, पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि जो आपकी assumption आपने ली थी कि D is moving towards the left was correct. That's why आपके पास VD जो है वो positive आ गया है. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, now when you compare the J coefficients, so on the left hand side, what is the J coefficient? 0. 0. On the right hand side, it is minus 6.928 plus omega BD. So once you solve it, omega BD comes out to be 6.928. Or sign chunki positive आया, it means your assumption regarding omega is correct, and this length BD is basically rotating in a counterclockwise direction with an angular velocity of 6.928 radians per second.
Okay, now you have determined the velocity of D, you have determined the angular velocity of BD. Now what should be our next step? Velocity of E. Basically, we need to find out velocity of E. So for finding the velocity of E, since link D is in general plane motion, so we are going to apply the relative velocity equation on link DE. So मैं top पे लिख रहा हूँ चूंकि जगह थोड़ी सी कम है. So for link DE, we are going to apply the general plane motion equation, relative velocity equation. So what should be our base point? D, because the motion of D is known to us now, so we can write the relative velocity equation as VE equal to VD, which is the absolute velocities of point E and point D, plus omega cross R. So what should be this omega? This omega should be omega DE. So आपके पास omega DE आ गया और R आपके पास relative position vector आ जाएगा, which is being written for the relative position of E with respect to D. Is this equation clear to all of you? Okay, in this equation, what should be our VD? VD जो हमने फाइंड किया हुआ क्या है वो? -6.98. -4i, isn't it? Yes, sir. So VD is going to be -4i. Can you judge the direction of omega D? कल हमने डिस्कस किया था इसको. Yes, sir. क्या होगा ये? क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इसको कंसिडर करें, दिस लिंक D is basically moving in this circle जो कि मैंने येलो से शो किए. This link is probably here जहां मैंने black cross लगाए. So it means कि आपके पास जो link D है वो यहाँ से लेके शायद यहाँ तक आएगा. It means कि ये link जो है वो इस तरह rotate कर रहे हैं ना counter clockwise direction. So we can write omega DE to be equal to omega DE cross RED, the relative position of E with respect to D. ये vector क्या होगा? So 2 cos 30i plus 2 sin 30. दोनों पॉजिटिव होंगे because lies in the first quadrant. So थोड़ा सा हम solution की तरफ देख लें, वो पेज कंप्लीट हो गया था. So we are considering this link ED and we have written the relative velocity equation taking point D as our base point. So VD is -4i. Similarly omega cross R में omega D हमने counter clockwise जज किया और R हमारे पास आ गया 2 cos 30i plus 2 sin 30j. As far as the velocity of point E is concerned, since the slider is constrained to move along the horizontal axis, so it should have the velocity along the horizontal axis. Positive या negative वो हम judge कर सकते हैं कि since CD is moving in a counterclockwise direction, so there is no way कि ये piston E जो है वो right की तरफ जाए. Piston E should always be moving towards the left. So we can write VE to be equal to minus VEI. So now taking this cross product, हमारे पास जो final equation आएगी that would be of the form minus VEI equal to -4i plus 1.732 omega DEJ minus omega DEI. Now once you compare the I and J coefficients, the I coefficient on the left side is minus VE, on the right side it is -4 minus omega DE. Similarly, the J coefficient is 0 and 1.732 omega DE. So solving these two equations would give you the value of VE to be equal to 4 feet per second towards the left. So this is how you are going to determine the velocity of this piston E at the instant shown. Is it clear to all of you? Yes, sir. So any question relevant to this problem? अगर आप इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो probably इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये मुश्किल तरीन प्रॉब्लम हो सकता था इस टॉपिक से रिलेटेड. अगर आप इसको समझ लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बाकी प्रॉब्लम्स भी आपके लिए कोई मुश्किल साबित नहीं होंगी. सो एनी क्यूरी रेलेवेंट टू दिस टॉपिक विच इज द रिलेटिव वेलोसिटी एनालिसिस, विच इज द वेलोसिटी एनालिसिस यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन. कोई चीज जो आप पूछना चाहें? velocity of A and C 0 होगी. वेलोसिटी ऑफ ए और देखें ए और सी तो ग्राउंड हुआ है ना, तो वो तो ग्राउंड जो चीज हुई हुई है, फिक्स जो चीज हुई हुई है, उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो जीरो ही होगी, दायरा वो ग्राउंड हुआ है. सो वी ए और वी सी दोनों जीरो हैं. लेकिन वी ए और वी सी की आपको जरूरत क्यों पड़ेगी? सर अगर हमने ए बी पे जनरल प्लेन मोशन अगर इक्वेशन लगानी है, नहीं, क्यों लगाएं? देखिए जनरल प्लेन इक्वेशन आप उस रिजिड बॉडी पे लगाते हैं जो जनरल प्लेन मोशन कर रहा हो.
ए भी तो रोटेशन कर रहा है, सी डी भी रोटेशन कर रहा है, तो इस पे तो सिंपल v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर लगेगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन तो लग ही नहीं सकती। नो सर, अगर हम ए को जीरो कंसीडर करते हैं तो ये इक्वेशन वापस आ जाती है। देखिए वो तो आ जाती है, लेकिन वही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप वो जो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन है ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ उस रिजिड बॉडी पे अप्लाई करते हैं जो जनरल प्लेन मोशन में हो, अदरवाइज तो आपकी रोटेशन वाली इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। सर, और सर जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ई है, ये जीरो क्यों एंड पे आया है? देखिए वो इस कॉन्फ़िगरेशन में 30 डिग्रीज के हिसाब से आपके पास ये लिंक जो है वो जिस स्पीड से डी मूव कर रहे हैं उसी स्पीड से ई मूव कर रहे हैं इस इंस्टेंट के लिए। अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मे बी 35 डिग्रीज कर दूं, तो शायद ये आपकी सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाए। अगर देखा जाए तो इस इंस्टेंट पे जो लिंक डी ई है वो भी एक तरह से ट्रांसलेशन कर रहा है, रोटेशन नहीं हो रही उसमें। Okay, any other thing which you want to discuss? Okay, so velocity analysis clear to all of you. हमने 3 एग्जांपल्स की थी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में कि पहली एग्जांपल में 2 ट्रांसलेशन, एक जनरल प्लेन मोशन था, सेकंड एग्जांपल में हमारे पास एक ट्रांसलेशन, एक रोटेशन और एक जनरल प्लेन मोशन में था लिंक, और थर्ड एग्जांपल में हमारे पास 2 रोटेशन और एक जनरल प्लेन मोशन में था। और जो हमने प्रॉब्लम एक्सरसाइज का ये सॉल्व किया है, इसमें हमारे पास 2 रोटेशन, 2 जनरल प्लेन मोशन और एक जो है वो ट्रांसलेशन में लिंक आ गया था। तो प्रोबेबली अब मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन में आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर ली है, आपको आइडिया हो गया है। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वो आप एज अ नॉन सबमिटेड होमवर्क के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स बाकी आपको जो है वो शो किए गए एट द स्टार्ट। सो प्रोबेबली ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आप एज अ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को नॉन सबमिटेड होमवर्क के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? Okay, so moving on to our next topic. अभी हमने relative velocity method की बात की थी for the velocity analysis of rigid body mechanism. Immediately after this method, we are going to move to acceleration analysis of a rigid body. और जिस तरह मैंने कहा कि ये जो instantaneous center method है, इसको फिलहाल हम अभी साइड पे कर देते हैं because of the shortage of time. Probably अगर हमें next week time बचा तो हम इस मेथड को थोड़ा सा देख लेंगे। अदरवाइज वेलोसिटी एनालिसिस के लिए एटलीस्ट एक मेथड भी आपको आता हो तो आप कर सकते हैं। ये बेसिकली वेक्टर मेथड है, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, जबकि इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड जो है इट इज अ स्केलर मेथड, जो कि आप अगेन मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स का कोर्स जो है उसमें भी पढ़ेंगे दोबारा। तो अगर टाइम मिलता है तो हम नेक्स्ट वीक इसको कवर कर सकते हैं, अगर टाइम नहीं मिला तो आप मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स के कोर्स में भी इस मेथड को जो है वो पढ़ रहे होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ अ रिजिड बॉडी मैकेनिज्म। सिंस वी आर स्टडीइंग द प्लेनर काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी और उसमें हम जनरल प्लेन मोशन की बात कर रहे हैं। जनरल प्लेन मोशन में हमने वेलोसिटी का देखा कि किस तरह हम वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं, इसी तरह एक्सेलरेशन कैसे हमें रिलेट करनी है, कैसे हमें डिटरमिन करनी है उस रिजिड बॉडी की जो कि जनरल प्लेन मोशन कर रही है, हमने किस तरह उसकी एक्सेलरेशंस को रिलेट करना है, थोड़ा सा इस हवाले से बात करते हैं। ओके, द एक्सेलरेशन, अगर आपको याद हो हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए थे व्हेन वी वर डिस्कसिंग द रिलेटिव वेलोसिटी एनालिसिस। हमने कहा था कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो सपोज एट टाइम t के ऊपर दिस रिजिड बॉडी इज शोन टू यू इन दिस पोजीशन, कि ये उसकी पोजीशन है, ये उसके 2 पॉइंट्स हैं a और b। एट टाइम t प्लस डेल्टा t, लेट्स सपोज दैट दिस रिजिड बॉडी हैज मूव्ड टू इट्स न्यू लोकेशन, जो कि यहाँ ब्लू से शो की गई है। ये आपके पास पॉइंट A आ गया है, ये आपके पास पॉइंट B आ गया है। सो सिंस points A and point B have undergone different displacements, therefore this rigid body has gone general plane motion, जिसमें simultaneous translation as well as rotation हुई है। इस general plane motion को हमने अपनी एनालिसिस के लिए जब हम वेलोसिटी एनालिसिस कर रहे थे तो क्या assumption कर ली थी कि हमने इसको इसके 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था। हमने कहा था कि सबसे पहले ये रिजिड बॉडी पूरी की पूरी जो है वो ट्रांसलेट कर गई है बाय दिस मच ऑफ अमाउंट which is shown to you here, और उसके बाद ये पूरी की पूरी रिजिड बॉडी अपने बेस पॉइंट के अबाउट दिस मच ऑफ थीटा जो है वो रोटेट कर गई। So simultaneous translation and rotation is being broken down into its translatory component as well as rotational component. So the relative velocity equation was written as Vb equal to Va plus Vba, where Vb and Va represents the absolute velocities of points A and B, and Vba represents the relative velocity of B with respect to A. Now, in order to perform the acceleration analysis, we are going to differentiate this equation with respect to time. So differentiating this equation with respect to time, the first term would become dVb over dt, the second term would become dVa over dt, and the third term would become dVba over dt. Now, as far as this dV over dt term is concerned,
this would be the absolute acceleration of point B. So we have replaced this dv over dt by AB. Similarly, this second term, which is dva over dt, would become absolute acceleration of point A. As far as this third term is concerned, this would become the relative acceleration of B with respect to A. तो ये तो सिंपल वो डिफरेंशिएशन आ गई. अब इसमें अगर हम इस जनरल प्लेन मोशन के हिसाब से देखें तो क्या हो रहा है कि आपके पास ये कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन का है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द ट्रांसलेशनल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के इस जनरल प्लेन मोशन में जो ट्रांसलेशन हो रही है इस रिजिड बॉडी में, वो ये ए रिप्रेजेंट करता है. यानी पहले ये पूरी की पूरी रिजिड बॉडी ट्रांसलेट हो रही है बाय एन अमाउंट ए विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर एज ए. And this AB is basically covering the rotational aspects of motion. So अगर मैं rotational aspects की बात करूं तो since point B is in pure rotation with respect to point A, so pure rotation के केस में acceleration vector किसके बराबर होता है? कुछ याद है rotation वाला केस? Alpha cross R. So we have two components of acceleration. One is alpha cross R, which represents the tangential component of acceleration. The other one is minus omega square R, which represents the normal component of acceleration. So overall the acceleration would be alpha cross R minus omega square R. So accordingly हमने किया क्या है कि चूंकि ये रोटेशनल एस्पेक्ट्स को ए बी ए कवर कर रहा था, इसको हमने इसके दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा. द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. द टेंजेंशियल कंपोनेंट वुड बी इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, द नॉर्मल कंपोनेंट वुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. सो आवर रिलेटिव एक्सेलरेशन इक्वेशन फॉर अ रिजिड बॉडी अंडरगोइंग जनरल प्लेन मोशन वुड बिकम AB vector should be equal to AA vector plus alpha cross R minus omega square R. So this equation is going to be applied on any rigid body which is undergoing general plane motion in order to relate A and alpha with each other. Is this point clear to all of you? Yes. Okay, now if we take a closer look at this relative acceleration equation, it involves this omega as well. What is omega? Angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस लिंक ए बी की कितनी इसमें रोटेशन हो रही है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेशन हो रही है. इट मींस के इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्सेलरेशन एनालिसिस इट इज नेसेसरी दैट यू शुड हैव नोन दिस ओमेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है एक्सेलरेशन का और उसमें ओमेगा गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू परफॉर्म the velocity analysis in order to find out this omega. Once this omega is known to you, only then you can apply the relative acceleration equation. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Yes. तो अभी हमारी जो अगले हम एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें जिसमें ओमेगा नोन होगा हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे. जिसमें ओमेगा नोन नहीं होगा उसमें पहले हम थोड़ा सा वेलोसिटी एनालिसिस करके ओमेगा फाइंड करेंगे. तो एक तरह से आपके जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है उसकी रिवीजन हो जाएगी और साथ साथ फिर हम ओमेगा जब फाइंड हो जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर देंगे. इसमें अगेन आपने ए को बेस पॉइंट बनाया है. अपने सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए बेस पॉइंट आप हमेशा उस पॉइंट को बनाएंगे जिसकी एक्सेलरेशन आपको नोन होगी. तो जिस पॉइंट की भी एक्सेलरेशन नोन हो उस रिजिड बॉडी में उसको आप बेस पॉइंट बना लेंगे और उसके रेफरेंस से दूसरी पॉइंट की एक्सेलरेशन आप जो है वो लिख रहे होंगे जिस तरह आप वेलोसिटी के केस में करते रहे. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Okay, so moving on to the various examples and problems relevant to this topic. Probably आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक की मैक्सिमम जितनी हम कर सकते हैं एग्जाम्पल ब्रेक से पहले कर लें. एक आध एग्जाम्पल और उसके बाद ब्रेक के बाद फिर हो सकता है हम एक आध एग्जाम्पल और एक आध एक्सरसाइज का प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व करें. और आपका क्विज भी आज अलाइंड है. आई होप कि तैयारी इम्पैक्ट की हर एक ने कर ली होगी. इंशाल्लाह इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंडक्ट क्विज नंबर 8, which is probably the last quiz of this course. Okay, starting with example 16-13. Can you see the figure of example 16-13? Yes. थोड़ा सा वर्डिंग इसमें मिस हो गई है, मैं इसको नीचे करूँ. ओके, इसमें है क्या कि you have three rigid bodies. One is a roller A or a rigid body A. The other one is rigid body B. And both these rigid bodies A and B are constrained to move along the inclines as shown to you in the figure कि 45 degrees के incline पे ये move कर रहे हैं. Then you have a rigid link which is connecting these two rollers. This link AB, it has a length of 10 meters and this rigid link is connecting point A and point B with each other. So let us read the statement first of all. The rod AB is confined to move along the inclined planes at A and B
if point A has an acceleration of 3 meters per second square and a velocity of 2 meters per second down the incline, at the instant this rod becomes horizontal, you need to determine the angular acceleration of the rod at the instant shown. So the kinematics of point A are known to you. That is, it is moving down with a speed of 2 meters per second and an acceleration of 3 meters per second square. You need to determine what is the angular acceleration of this rod AB at the instant shown when this link AB becomes horizontal. Both the inclines are at an angle of 45 degrees as shown to you in the figure. Now, since omega is not known to you here, and in order to apply the relative acceleration equation, you will be requiring that omega. So it means that first of all, you need to perform the velocity analysis, and then you are going to perform the acceleration analysis. Okay, before proceeding on to the velocity analysis, what type of motion this link AB is undergoing? General plane motion. जनरल प्लेन मोशन, चूंकि आपको नजर भी आ रहा है कि जो नेक्स्ट इंस्टेंट आपको दिखाया गया है इस पे ये लिंक ए बी ना सिर्फ ट्रांसलेट हुआ है बल्कि साथ साथ रोटेट भी हो रहा है. सो इट मींस दैट इट इज अंडरगोइंग जनरल प्लेन मोशन. सो इन ऑर्डर टू अप्लाई द रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन, बेस पॉइंट हम किसको बनाएंगे? सर ए को. ए को बेस पॉइंट बना लेंगे. सो आवर इक्वेशन वुड बिकम वी बी शुड बी इक्वल टू वी ए plus omega cross r. So omega is going to be omega AB of this connecting rod, and the relative position is going to be the relative position of B with respect to A. Okay, what about VA? Can you identify this VA vector? Yes sir. Given है 2 meter per second. But we need to write it in vector form. सर वो 45 degrees के साथ इसको लगा देंगे. So fourth quadrant है positive x, negative y. So this vector would become 2 cos of 45 I minus 2 sine of 45 j, isn't it? Yes. Okay, what about omega AB? Can you identify this omega's direction? Yes sir, counterclockwise. It is counterclockwise, so we can write it here as omega AB k. And what about RBA vector? Sir 10 I hat. So it is going to be this vector, and it has a magnitude of 10 units directed towards the positive x-axis if you are using conventional xy coordinate system. So it is going to be 10I. Taking this cross product, the right hand side would become 1.414 I minus 1.414 j, and omega cross r जो है वो अगर हम वही I j k कंसिडर करें, it is going to be plus 10 omega AB, and k cross I is j, so it would become 10 omega AB j. So I hope that the right hand side is clear to all of you. Yes. Okay, what about the left hand side of this equation? It represents the absolute velocity of B, although you don't know its magnitude, but you know that once point A is moving downward, point B would be moving up that incline, isn't it? So the direction of VB is known to us, that is, it is going to be at 45 degrees with respect to x-axis. So can we write this VB vector? क्या होगा ये VB vector? VB cos 45 plus VB sin 45. I hat J hat. दोनों positive क्योंकि first So since it is first quadrant, VB cos 45 I plus VB sin 45 J. ये आपके पास VB आ जाएगा. So it is a vector equation. So you are going to compare the I and J coefficients on both sides of this equation. Once you compare these I and J coefficients, you are going to get the values as VB comes out to be 2 meters per second, whereas omega AB, which is required for applying relative acceleration equation, so this omega AB comes out to be 0.283 radians per second, and it comes out to be a positive quantity. So our assumption is correct, and this link AB is rotating in a counterclockwise direction. So you have completed this velocity analysis, and you have determined the value of VB and omega as shown to you here. Is this point clear to all of you? Yes. Okay, so once we have found this omega, now we can move towards the acceleration analysis. Now, in order to perform the acceleration analysis, we are going to apply, since we have discussed that this link AB is in general plane motion, so we are going to apply the relative acceleration equation on this link AB. What should be that relative acceleration equation? Base point हमें किसको बनाना चाहिए?
So since the acceleration of A is known to us, so we are going to make A as our base point. So the equation would become acceleration of B equal to acceleration of A plus alpha cross R minus omega square R. Here alpha is going to be the angular acceleration of this link AB. R is going to be the relative position of B with respect to A, and omega is going to be the angular velocity of this link AB. So this is the relative acceleration equation being applied on link AB, which is in general plane motion, taking point A as our base point. Okay, we need to write all these things in terms of vectors. AA, can you identify AA vector? Yes, sir. Fourth It is quadrant में 3 cos 45 minus it is 3 3 sin cos 45. 45 sin 45 j. ये आपके पास वेक्टर आ गया AA. Okay, what about alpha AB? First of all, what does this alpha represents? Alpha है क्या ये? Tangential axis. It is the angular acceleration of link AB. अच्छा, अब angular velocity तो आप कुछ common sense के साथ judge कर सकते हैं, but can you judge कि ये angularly accelerate हो रहा है या decelerate हो रहा है? Can you judge it? No, sir. So if you cannot judge it, you are always going to assume it in a counterclockwise direction. Solve it. If the sign of alpha after solution comes out to be a positive quantity, that means your assumption is correct. If it comes out to be a negative quantity, that means you are going to reverse your assumption. So alpha judge करना possible नहीं है. ओमेगा तो आप जज कर सकते हैं उसकी मोशन को देखते हुए कि अगले इंस्टेंट पे कहाँ मूव कर रहे हैं, लेकिन अल्फा जो है वो आप जज नहीं कर सकते. Therefore, always assume alpha to be in a counterclockwise direction. Solve it. If the solution comes out to be a positive quantity, आपका assumption correct है. If that solution comes out to be a negative quantity, then you are going to reverse your assumption. So accordingly, जब आप alpha cross r लिखेंगे, तो यहाँ हम इसको alpha ab k के तौर पे जो है वो assume कर लेते हैं. Is this point clear to all of you? Yes. Okay, what about RBA? We have already discussed it. It is basically 10I. So आपके पास alpha cross R ये हो जाएगा minus omega square R. So minus 0.283 जो हमारे पास omega की वैल्यू आई थी. अब यहाँ देख ली इस इक्वेशन में omega is basically scalar वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है. बाकी चीजें वेक्टर हैं. ओमेगा जो है उसकी स्केलर वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है. So it is 0.283 square into 10I. Is this equation clear to all of you? Yes. So once you further solve it, this would become 3 cos 45 would become 2.12. So 2.12i minus 2.12j. Alpha cross r के लिए आप वही smaller circle इस्तेमाल कर सकते हैं. It would be 10 alpha ab. What is k cross I? It is j. So आपने इसको प्लस 10 अल्फा ए बी जे के तौर पे लिख लिया. इसी तरह 0.283 को स्क्वायर करके जब आप i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बिकम माइनस 0.8 i. So the right hand side of this equation would become like this. Okay, what about the left hand side? What does this left hand side represents? It represents the absolute acceleration of B. So since point B is constrained to move along the incline, so you can write this AB in terms of vector as previously जो आपने VB के साथ किया था. So AB can be written as AB cos 45 I plus AB sin 45 J. So this is going to be AB, which is AB cos 45I plus AB sin 45 J. और cos 45 या sin 45 0.707 होता है. So 0.707 ABI plus 0.707 ABJ should be equal to 2.12 minus 2.12J plus 10 alpha ABJ minus 0.8I. Okay, now since it is a vector equation, so you are going to compare the I and J coefficients on both sides of this equation. So once you are comparing the I coefficient, it means that 0.707 AB should be equal to, on the right hand side it is 2.12 और किसके साथ आई है? Minus 0.8. Minus 0.8. So the I coefficients equation would be like this. When you write the J coefficients equation, on the left hand side 0.707
AB should be equal to minus 2.12 plus 10 alpha AB. ये आपके पास दो equations आ जाएंगी by comparing the I and J coefficients on both sides of this equation. Once you solve it, the value of AB comes out to be 1.87 meter per second square, and accordingly the value of alpha comes out to be 0.344 radians per second square. So अल्फा आपका पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है कि दिस अल्फा इज एक्टिंग इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा जो आपने इससे पहले वेलोसिटी एनालिसिस में निकाला था? Counterclockwise. वो भी काउंटर क्लॉकवाइज था. सो अल्फा एंड ओमेगा हैव कम आउट टू बी in the same direction. So what does it mean? Accelerate हो रहा है. The body is angularly accelerating at this moment. Is this point clear to all of you? Yes. Yes. So with this, example 16-13 is complete. We are going to take a break of 10 minutes